धियो यो नः प्रचोदयात है, उसमें सब लोग धियो यो न प्रचोदयात करते थे. Don't give me the intellect, oh Lord. Please do not give me the, because we are constantly chanting it wrong. Namaste everyone. Welcome to another episode of Insta Live with Akti Lifestyle, where we talk about health related practices. Today we have a very special guest with us. Okay, Hello. Namaste ma'am. Hello. Namaste. Am I visible, कैसे हैं? audible? Perfect. Yes. I'm good. How are you? आप कैसे हो? I'm good. बढ़िया. तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करी थी. इससे पहले हम सेशन शुरू करें. लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू, जिनको नहीं पता है. तो इनका नाम एकता है, और मतलब एकता पाठक मैम है. मेरे साथ में मैंने इनको तब जाना जब मैंने अपना प्रीनेटल कोर्स किया था. तो उनमें ये मंत्र योग के बारे में सिखाती हैं कि मंत्र कैसे बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, आने वाले बच्चे के लिए और सब चीज़ों के लिए. तो इन्होंने व्हाट आई एम फैसिनेटेड अबाउट कि जब मैंने इनके बारे में सीखा, तो इन्होंने अपनी जो एक होता है ना वेल सेटल्ड जॉब छोड़कर फिर ये योग में आई है. तो ये इवन एमबीए इन फाइनेंस भी है. ये फाइनेंस में इनका जॉब था, पूरा अच्छे से सेटल थी, और वो छोड़ के फिर ये योग में आई है. तो ये भक्ति योग फॉलोअर हैं और मंत्र योग स्पेशलिस्ट हैं. ये इंटरनेशनली एक्लेम्ड एंड एक्रेडिटेड योगा एंड वेलनेस कोच हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों को वर्कशॉप्स भी देती हैं, क्लासेस भी देती हैं, पर्सनलाइज क्लासेस भी देती हैं. इवन ये टेस्टी योगा डाइट्स भी लोगों को सजेस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स. सो आई हियर वेलकम यू हियर. एंड आई फर्स्टली बिफोर गोइंग फॉर द सेशन, आई वांट टू नो कि आप योग मतलब अपना जॉब छोड़ के योग में क्यों आए, और आप तब से आप योग में ही क्यों जुड़े हैं, मतलब क्या रीजन? मैंने जब जॉब छोड़ा था, टू बी ऑनेस्ट, मेरे हेल्थ कंसर्न्स थे. मेरे को बैक एक थी और स्टमक रिलेटेड इश्यूज शुरू हो गए थे. So before I start, I really want to thank you for this opportunity. That was such a sweet introduction to by one of my students, and it feels nice to see the students excelling in their path and doing live sessions. Not an easy job, but well done. So now coming to the question कि कैसे मैं आई corporate job से इधर. Is it okay if I speak in English Hindi mix? I mean, you want me to speak only in Hindi? नहीं, आप English जैसे कंफर्टेबल हो, इंग्लिश हिंदी चल. Okay. So when I switched over from corporate to yoga, it was a realization that my eating, sleeping, waking up and coming back to the job, paying my billing is definitely not the purpose of my life. The soul is craving for something else. You know, that calling was there inside that, no, I have to do something for the society. When I got so much of health benefit from yoga, not only bhakti yoga, not only hatha yoga, even mantra yoga, I got a lot of physical, mental and spiritual upliftment. I could feel it, I could sense it, cannot be described in words. उसके बाद वो जो realization था, it was never looking back into the corporate job. तब मैंने सोच लिया था कि मैं इसी path को on a mission to spread to everyone the science of गर्भ संस्कार, the science of yoga and bhakti yoga and mantra chanting and hatha yoga. जो physical yoga है, that is imperative. It is a prerequisite to every other thing. मतलब मैं mantra chant भी नहीं कर पाऊंगी if I'm not able to sit consistently at one place for 5 minutes. So hatha yoga and physical health comes first, then comes the mental, spiritual and other koshas in the body. Yeah. Right. So I hope that answers. Yes, that answers. Okay. So अब सेशन अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप मंत्र योग में और भक्ति योग में मतलब एक एक्सपर्टीज है, आपको काफी उस चीज का नॉलेज है. तो मैं ये जानना चाहूंगी एग्जैक्टली मंत्र क्या है और वो कहाँ से आया है, और मतलब बहुत सारे सवाल हैं, बट मंत्र क्या है सबसे पहले? So actually ये topic ऐसा है कि I can talk for hours all at one, but I would tell you in short कि mantras are basically, if you bifurcate them, मन we know is a word for चित्त, मतलब उसको replicate किया जाता है. Though चित्त is much deeper, but मन is जो दिखता नहीं है, it is the subtle body, and tra means the tool. So it is the tool to harness and to focus the mind and to calm the mind. And what did Sage Patanjali say for the aim of yoga? It is yoga chitta vritti nirodha. And that vrittis of the man, the fluctuations of the man, it acts as a tool, the main tool, because it is the sound, the vibration. And the vibration was the first thing that, you know, manifested into the consciousness. So it is the tool to harness the mental powers and to calm the mind at one same time. So it brings a balance between equanimity, like it brings equanimity,
It also helps us to feel more relaxed and calmer. So they are the tools. Now coming on to what are they, when I tell them in simple language, then people understand better. They are a vibration which cannot be, heard by our ears initially when they were, written down or compiled. We still don't have 10% of the knowledge of what is actually there and heard by our sages, the Maharishis, the Saptarishis. All the knowledge was passed on to them, but it was all oral transmission. It was all Shruti. सिर्फ सुन के सीखा सबने, बट सुन के उसको कंपाइल हमारे सेज पतंजलि ने किया. तो मंत्र ऐसी शक्ति थी, ऐसी वाइब्रेशन थी जो सिर्फ उन्हें महसूस हुई, एंड दोज वाइब्रेशंस गॉट कन्वर्टेड इनटू sounds which can only be felt in deeper state of consciousness. So they are the tools. And बहुत simple language में जब मैं बच्चों को सिखाती हूँ, when I teach very small kids, I tell them they are like your Wi-Fi passwords. So the moment you click on the right password, you will be able to connect to the internet. But even if there's a slight change or fluctuation, you will not be able to reach your Wi-Fi password. It will not get connected. So they are the passwords which evoke the inherent divinity and evoke the higher consciousness state. ओके अच्छा, जैसे आपने कहा कि पासवर्ड में हल्का सा भी चेंज होता है तो वो हायर डिविनिटी तक नहीं पहुंचता है, तो फिर मंत्रों का भी ऐसा है कि कुछ एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिससे हमें उनका उच्चारण करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, मतलब कैसे? वेरी नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली मंत्र जो होते हैं दे आर फ्रीक्वेंसीज. तो अगर आप रेडियो स्टेशन, आपको 93.5 सुनना है, ओके, आप 93.4 भी लगाओगे तो थोड़ा सा आपको बेसिकली साउंड नहीं आएगी, डिस्टर्बेंस होगी, हल्की सी खरखर होगी. सेम थिंग अगर आप मंत्रास में आप 100% बेनिफिट चाहते हो तो आप उसको सही तरीके से चैंट करो. एंड ब्यूटिफुली हमारे सेजेस ने, हमारे असेटिक्स ने हमें तरीके भी दिए कि दिस इज द वे यू शुड बी चैंटिंग मंत्रा. सो दे हैव सेड अक्षर शुद्धि 3 ways: अक्षर शुद्धि, स्वर शुद्धि एंड मंत्र शुद्धि. अगर ये तीनों साथ में है तो आपका मंत्रा चैंटिंग करेक्ट है. फिर सेज पणिनि ने हमको ये दिया कि हाउ यू आर नॉट सपोज टू चैंट और हु इज अ बैड चैंटर. उसके लिए उन्होंने एक श्लोक दिया, गीति शीघ्री यथाशक्ति अनर्थज्ञो अल्पकंठश्च शेरते पादकादमः, विच मीन्स अगर इनको बाइफिकेट किया जाए तो क्विकली आई विल टेल यू, डू नॉट सिंग द मंत्रास, only chant them, because chanting is going to enchant you. It's going to make you calmer. Do not, chant it with a shaky voice. कुछ लोग एकदम, they just stand for the sake of it, like Pandit वगैरह who come to our home. They just stand for the sake. खत्म. Do not make it very fast. Always chant after listening to a mantra. Listen to it multiple times, infinite times, and then you will understand the meaning of it better. And you will understand how it is making you feel inside. You will be able to experience it. Then comes, do not chant with shaking your body too much, and your posture is very important. So these are the 6 things they have given. And I think one I missed, which is, do not chant unless you know the essence of the mantra. So you're just chanting because somebody else is chanting, but you don't know why are you chanting Om or Gayatri mantra, then it is not fair. Then it is like, you're just ratifying your concepts and going and puking it tomorrow in the exam. That's not going to work for you in the long run. So these are the 6 things given by Sage Pani. ओके, तो मतलब किसी भी मंत्र को चांट करने से पहले हमें उसका भावार्थ पता होना चाहिए, उसका भाव पता होना चाहिए, तभी हमें उस मंत्र को चांट करना चाहिए, बेसिकली कहने का मतलब ये. ओके, तो जैसे आपने गायत्री मंत्र कहा, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बता सकें कि सही तरीका क्या है गायत्री मंत्र को चांट करने का. आपकी वॉइस भी बहुत मेलोडियस है, तो इसलिए आई रिक्वेस्ट कि अगर आप बता सकते तो. हाँ, श्योर. तो मैं गायत्री मंत्र इसलिए ले रही हूँ बिकॉज देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मंत्र. एक मंत्र होता है जो गुरु ने आपको दिया है, विच यू आर सपोज टू चैंट. एक होते हैं यूनिवर्सल मंत्र जो कोई भी चैंट कर सकता है, लाइक गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय, ओम चैंटिंग. ये सब ऐसे मंत्र हैं जो कोई भी उठा के कभी भी चैंट कर सकते हैं. लेकिन सही तरीका गायत्री मंत्र का ये है, यू विल बी शॉक्ड कि ये है, क्योंकि हमने बचपन से वो फिल्मी स्टाइल वाला सुना है, ओम भूर्भुवः स्वः, वही हमारे दिमाग में बैठ गया है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तरीका आप नोटिस करेंगे कि उसको आप जब बार बार सुनेंगे तो आपको ऐसे इरिटेशन होने लगेगी. यू विल नॉट फील वेरी पॉजिटिव आफ्टर लिसनिंग टू इट. But if you listen to the right way of chanting it, you will feel very energetic, soothing, calming. तो वो ही सही तरीका है. I'll tell you, for example, जब हम चैंट करते हैं गायत्री मंत्र, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे प्राणायाम बना दें.
और वो जब प्राणायाम बन जाता है, then nothing is more powerful in your Anandamaya kosha to give you bliss when you combine a mantra with a pranayam. So the ideal way of chanting is you start with a deep Om and you try to finish that mantra at least with one exhalation, one mantra. Okay. Now the common thing that we have to consider, जो mistakes होती है वो होती है ओम भूर्भुवः स्वः में भूर्भुवः कर देते हैं, लास्ट में जो धियो यो नः प्रचोदयात् है उसमें सब लोग धियो यो न प्रचोदयात् कर देते हैं. Don't give me the intellect, oh Lord, please do not give me the, because we are constantly chanting it wrong. We are accumulating in our prarabdha karmas. We are constantly saying, don't give me the intellect. We are asking the highest energy that please do not shower me with intellect. If we make it na instead of na, there is a two dot which is halant over there, and अगर हमने उस विसर्ग को भूल गया तो हम उसको wrong chant करेंगे, and we constantly make the meaning opposite of what we are actually seeking for. So उसका जो हलंत है, because it is in the middle of the sentence, it becomes धियो यो नः प्रचोदयात्. There is a small silent f sound in it. So it becomes धियो यो नः प्रचोदयात्. I will just chant it for you and maybe that will help you to understand how to chant it correctly. I've kept my system ready. Om bhurbhuvah swaha tatsavitulvarenyam bhargo devasya dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. So if you see, in one breath I tried to finish the mantra with the right way of chanting it. अगर उसी को हम प्राणायाम की तरह कर रहे हैं, with one inhalation and while exhaling the stomach and the chest going in, so it becomes a beautiful combination of pranayam with mantra. करेक्ट. And we get maximum benefit. राइट. हाँ, तो बेनिफिट में आते हैं कि क्या फायदे होते हैं, मतलब मंत्र के हमारे बॉडी पे, माइंड पे, इन सब पे जो फायदे, तो ये तो हमें दिखते हैं, बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं जो शायद हम देख भी नहीं सकते, तो क्या उनके फायदे होते हैं? तो जैसा मैंने बताया कि दे आर वाइब्रेशन, वी गो फॉर एक्यूप्रेशर, वी गो फॉर एक्यूपंक्चर, जिसमें हम वाइब्रेशंस पे, हमारे मरम पॉइंट्स पे, देयर वाज अ शास्त्र कॉल्ड नाड़ी शास्त्र, जिसमें हम ये देखते थे कि कौन सा साइड आपका एक्टिव है, कौन सा साइड ज्यादा इनएक्टिव है, एंड दिस इज कॉल्ड स्वर योगा ऑल्सो. तो जब हम मंत्रा चैंट करते हैं तो नेचुरली हमारी जो नाड़ीज है, जो हमारे एनर्जी चैनल्स है, वो क्लीन होने लग जाते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग अ प्राणायाम naturally. So from japa to ajapa, जब हमारा मंत्रा चैंट becomes a part of our daily life, continuously हमारे मन में, हमारे शरीर में वो चैंट चलता रहता है. Like, अगर आप 3 बार गायत्री मंत्र बोल रहे हैं पूरे दिन में, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में वो चलता ही रहेगा. अगर आपने एक मंत्र को बार बार सुना, that happens to songs also, right? तो वो जप से अजप बन जाएगा. Like it will become an eternal frequency. And very interesting thing, they have got mystical powers, they are very mysterious, as we said the topic. तो क्या होता है उन मंत्रास में, एक बार आपने जो शब्द मुंह से निकाला, चाहे वो अभी जो हम बात कर रहे हैं या कोई भी कहीं पे भी किसी भी कॉर्नर में, तो वो जो अक्षर है, अक्षर इज समथिंग, अक्षर आया कहां से है? इट इज द वर्ड विच हैज गॉट कैप्चर्ड इन द आकाशिक रिकॉर्ड्स. दैट इज फ्रॉम वेयर द आकाश एंड अक्षर हैज कम, द वन विच बिकम्स द इटर्नल ट्रूथ, इटर्नल वाइब्रेशन. तो हर एक चैंट जो हम बोल रहे हैं, चैंट कर रहे हैं, it becomes a part of eternity. So not only is it benefiting us as a universe, it is benefiting the whole of the universe. Even Mahamrityunjay mantra जो हम बोलते हैं, it creates a protective shield not only to us, not only to the family members, but even the neighbors around 3 kilometers. So these are so powerful. So coming to the physical benefits of it, I can say there is not even a single system in our body out of the 14 जिसमें फायदा ना हो. So whether it is mainly your nervous system gets utmost benefit by chanting the mantras, and mainly out of the nervous system also the parasympathetic nervous system जो हमें relax करता है, हमारा left side of the nostril से related है, वो हमको सबसे ज्यादा benefit देता है. मतलब parasympathetic nervous system बहुत quickly activate हो जाता है by chanting mantras. Then other systems like hormonal systems, your physical skeletal system, muscular system, reproductive system, सब कुछ फायदा होता है उससे, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशंस है मंत्रास की, they pass to the body like mercury passes in the thermometer, and they create a sort of vibration
to regenerate the cells which have got degenerated, or they will help to flush out the cells which are degenerated. So ये lymphatic system को activate करता है, so it boosts your immunity. These are, मैं बहुत limited बता रही हूँ because of the time constraint, but I can go on and on with the benefits. There are multiple benefits. I've seen people healing by just chanting Gayatri Mantra. If they just chant Gayatri Mantra, they are working on their physical body, their mental body, and they're working on their spiritual body as well. So moving on to the mental benefit, because of the neuro-linguistic effect of these and the electromagnetic waves that these mantras create, they have an immense power to calm your mind immediately, to evoke the inner consciousness, like it makes you aware of your inner self. You come to know that no, I'm not the body, I'm something else. It becomes a meditation. It helps your brain to function better. And in fact, there are many researches going on where people are making their children chant, and the IQ level of the children is increasing by 10 to 12 points. This has been proven in the research. So children who chant mantras, their mental power, their IQ, their EQ, their SQ, emotional quotient, spiritual quotient, everything boosts up. So this comes to mental benefit. Now spiritual, we have already discussed in detail. They act like a tool to connect you to the divinity. So we have a silver cord connection with the divine, right? Most of us who are like yogis will be aware that we connect to the astral body with the silver cord. It helps us to make that cord stronger. So we can connect easily to the divinity by chanting the mantras. Like we had in PK movie, wrong number, but they are the right numbers to connect to the divinity. They can never go wrong if you just put your efforts to chant them correctly. तो ऐसा भी कोई इंस्टेंस होता है क्या जहाँ पे मंत्र चैंट नहीं करना चाहिए, किसी किसी ऐसे लोगों को जिनको, या कोई सिचुएशन जहाँ पे नहीं करना चाहिए, जहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? ऐसा anybody who breathes should chant. Okay, but don't chant unless like universal mantras you can chant, of course, like Vishnu Sahasra mantra and Ram Raksha, all of that you can chant anytime. But when it comes to mantras which are given by Guru, which are like passed on from a Guru to you, like certain Bij mantras, or let's say your Ram, your Manipur chakra is always very active, and still you are going on chanting Ram chant, it will overactivate that mantra, right? Like that chakra. So do not chant unless somebody, Guru, has given you that particular mantra, that Guru has identified that you are weak with your heart chakra. So please chant this particular Bij mantra. Never chant Guru mantras unless they have been passed on to you. But the normal mantras are very protective and they really help to make your physical and mental health better. तो मतलब बेसिकली अगर मैं इसको समरी करूँ तो जैसे कि जो मंत्र है उनको राइट चैंटिंग करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट चैंटिंग होगी तो ही उनका जो करेक्ट हमें बेनिफिट मिल सकता है फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, वो ही तभी मिल पाएगा। अगर इनकरेक्ट चैंटिंग है तो फिर उस जो इनकरेक्ट चैंटिंग का मीनिंग बैठ रहा है वो हम जो बेनिफिट मिलेगा वो भी उस मीनिंग के हिसाब से मिलेगा, तो वो मीनिंग कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने बताया कि गायत्री मंत्र जिसे कि हमें इंटेलेक्ट मत दो, तो फिर वो वैसा ही चलता जाता है। Right. Even if we are, sorry, I'll just add to this because otherwise people will get scared to chant. See, ultimately, all comes to love. We all have come to spread love to each other, right? But if you're chanting your mantras with love and the intention is love to the divine, then agar aap mistakes bhi kar rahe hain minor, it's okay. Matlab they will not get impacted to your prarabdha karma. But if you're making a continuous mistake without even striving to correct it, like आज का सेशन सुनने के बाद भी आपने कोई भी मंत्र उठा के चैंट करना शुरू कर दिया, then it is definitely not good. It is like you already know the answer but you're still writing the wrong answer in your question paper. So it is a deliberate effort that should be put to know the right way of chanting. The at least उसका essence पता होना चाहिए मंत्र का. अगर आप ओम चैंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप गायत्री मंत्र कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है। अभी भी लोगों को लगता है गायत्री मंत्र कोई देवी है, गायत्री करके उनके लिए हम चैंट करें, उनको खुश करें। नो नो नो, वो तो खुशी है, देयर नेचर इज हैप्पीनेस। It is we are chanting so that we can ignite the inner divinity within us, which is like a sun. So गायत्री मंत्र में लोगों को अभी भी लगता है कि we are chanting for Devi and to make the Devi happy for after chanting it. No, but it is actually the mantra which invokes the inner intellect. हमारी जो ज्ञान चक्षु है, जो हमारी इनर विजडम है, जो हमारा अंदर का ज्ञान है हमारे अंदर, उसको इवोक करने के लिए भी चैंट दिस
to ignite the inner sun within us. हमारे सबके अंदर एक sun है छुपा हुआ, एक अग्नि है, एक sun की तरह बहुत प्रज्वलित power है, the will power or the power to ignite anything. वो उसको evoke कर रहे हैं. We are not only asking for intellect, we are asking that may the spiritual divinity awaken. That is what we are doing by chanting the mantras, this Gayatri mantra. Yeah, so never be scared to chant. ओके, ठीक है। मैं लास्ट सवाल पूछना थी, अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो फिर वो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के हमें पूछ सकते हैं। ओके, मैं पूछना Sure. थी कि बच्चों को हमें कब से सिखाना चाहिए मंत्र का? जैसे योग का है कि हाँ, हमें योग में थोड़ा सा उन्हें लेट लाना चाहिए, मतलब 11 इयर्स के बाद उन्हें थोड़ा सिखाना चाहिए योग की प्रैक्टिसेस और सब चीजें, लेकिन मंत्र चैंटिंग कब से हम उन्हें करवा सकते हैं, सिखा सकते बच्चों को पेट से, जब से वो पेट में है, you should start because the vibrations will help them to become better humans, and we all need that. The world needs better humans than anything else. We all need better people on this planet rather than very intellectual. We want kids who are more compassionate, more kind, spreading love around. So उनको जब आप जैसे ही पता चले आप conceive हो गए हैं, there are many mantras given by Sage Shaunik. There are Garbh Raksha mantras. There are other mantras like Ram Raksha. They are going to help you materialistically, matlab physically to protect. But there are mantras like Gayatri Mantra, Mahamrityunjay, Om chanting, then Saraswati Mantra. They will keep the baby very calm, and the baby will turn out to be very the bond with the baby will improve because your voice, the baby will be able to connect. So ASAP is the answer, as soon as possible, at the earliest. हैं? राइट, करेक्ट। इतना कुछ मतलब जानने को मिला है आपसे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं अभी भी नई जो मैंने सीखी है, मतलब मैं आपके साथ में जुड़ने के बाद, क्लास लेने के बाद भी मैंने उस टाइम पे भी कुछ चीजें सीखी थी, लेकिन स्टिल दे आर वेरी इनसाइट जो कि मेरे लिए भी नया है, मेरे लिए भी जो मैंने नया सीखा है आज आपसे, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू कि आप यहाँ पे आए, हमारे साथ में जुड़ी और हमें इतना कुछ सिखाया मंत्र के ऊपर। आई नो टाइम थोड़ा कम है, इसलिए हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा पाए हैं, बट इन फ्यूचर अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आपसे जरूर आगे जुड़ के और इस टॉपिक पे किसी और भी टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ Sure. यहाँ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू फॉर ऑल द इनसाइट्स एंड नॉलेज यू हैव शेयर्ड विद अस।